I don't say 100%, but 70 to 80% questions you can solve easily. That is enough to crack your examination to get the rank or whatever the seat in good colleges. Okay. Okay. Now let's go here. So till here we have studied what happens when donating group is there. What is I stands for inductive effect. Plus I groups, minus I groups. Plus I groups like methyl, ethyl, propyl donating. Minus I groups NO2, cyano, like that. Okay, next is reaction with metal ions. What is the next? Reaction with metal ions. I hope you can see my screen, Aishwarya. Yes, sir. Okay, so what happens when amines react with the metals or metal ions? So here metal ions means, for example, AgCl is a ionic compound, Ag plus and Cl minus. So that's how they are saying it is a metal ions. Amines react with metal ions to form complexes. Which complexes this is? Coordination complex. Coordination compounds will form. It will act as a ligand because this is the Lewis base, this is the Lewis acid. So some complex coordination bonds will be formed. Here two molecules of CH3 and H2 is forming the coordination compounds. Here with copper that is forming. Okay, with this methylamine, ethylamine, propyl. Whatever the amine is, with metal ions usually they form coordination compounds, ligands. Next, reactions with acids. So what happens with the acids? We know salts will form. You have to add HCl to this one. Basically, whatever the lone pair of electron is there, that will give to this H plus, then positive charge will be generated. So that is only this hydrogen you add to this one. So CH3, NH3 plus and Cl minus. So like that you club and you write. So like CH3, NH3 plus Cl minus. Aniline and reacting with the HCl, NH3 plus Cl minus. HCl को इसको add करो. H2, H, NH3 हो जाएगा Cl minus. क्योंकि lone pair this is giving to this H plus. Here it is a H plus and Cl minus. So like that salts will form. If sulfuric acid is there, so sulfuric acid means H plus and HSO4 minus. That is the meaning. This gives H plus, right? So that H plus you add to here. So NH2 plus and whatever this HS4 minus you write. So NH2 plus HS4 minus. So reactions with acids, what happens? Salts will form here. In between, you guys should ask me a few questions. You are not asking me any questions, just blindly. Okay. Reactions with acid chlorides. Reactions with acid chlorides. What happens when they react with the acid? This reaction we have studied already. इस type of का आपको कैसे लिखना है एग्जाम में अगर दिया तो आपको eliminate करो. Eliminate कौन सा condensation reactions basically HCl, H2O. अगर इसके पास H है दूसरे के पास next to CO जो ग्रुप है उसको eliminate करने के लिए कोशिश करो. Product, end of the product. ये mechanism कैसे होता है steps इधर दिखाया. Okay, if you wish you can go through that one. कैसे product इसको लिखना है, इसको orientation कैसे लिखना है वो थोड़ा देख लेना इधर. क्या है ये? This is the ethanamine. So what is ethanamine that you write here? Ethanamine कैसे लिखते हैं उसको लिख दो इधर. C2H5 and H2. So C2H5 and H2 means CH3, CH2, N, H2. Like that you practice CH2 and H2. Okay. Plus acetyl chloride. What is this one? CH3CO, Cl. Acid chlorides. These are acid का जो chlorides है, that is only acid chloride. What is acid? CH3CO, OH. OH का जगह में अगर Cl आ रहा है, so what is acid chloride? These are the products of the acid chloride. तो उसको Cl इस साइड लिख दो. COCH3 ऐसे ओरिएंटेशन में लिखो ताकि तुम प्रोडक्ट आराम से लिख सकते हो. सो क्या करना है आपको? सीधा सीधा HCl, सिंपली HCl एलिमिनेट करो, दोनों को ऐड करो. सो व्हाट फंक्शनल ग्रुप इट इज नाउ? CH3 CH2 NHCO CH3. Okay, CH3 CH2 को इधर सिंपली C2H5 लिखा हुआ है. So like that you can write expand CH3 CH2 NH CO CH3. What this functional group CO NH means? Amide it is, right? And basically you are eliminating at the end HCl. So all these things you no need to show in examination. Yes, सब आपको exam, but for your understanding it is important. If they given you these reactants, if you want to prepare amide, this reactant you take and you make the amide. Okay, so this is the another amide. So इसको कैसे लिखना? डाइएथेन का आप H को इधर से निकाल दो Cl. ऐसे ओरिएंटेशन करो, आपको इजी रहेगा प्रैक्टिस में. Later by looking at the reactants only you can write HCl. ये जहां से निकाल रहे हो उसके साथ इसको इधर ऐड करके आपको लिखना है. So that's how C2H5 and C2H5 COCH3 HC. This is called NN diethyl ethanamide. Okay.
Now, the same way, this is also intermediate. This is also product of the acid only, like anhydrates. Anhydrate CH3 CO twice O, CH3 COCl, CH3 COOCH3 or something, any ester. So esters, anhydrates, acid chlorides, amides, all these are the products of the acids only. Okay, by using this also, anything you can use to prepare the amide. So if you are taking this anhydrate, this is ethanoic anhydrate. Okay, ethanoic. Why? Because two carbons, ethanoic anhydrate. So two are the ethyl, two carbons, ethanoic anhydrate. Okay, acid anhydrate, ethanoic anhydrate. So what is the acid? Main acid, this CH3CO, acetic acid ka, this one is anhydrate. So now what you have to do, इसको इस part को हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देना, इधर का एक हाइड्रोजन, रेस्ट ऑल पार्ट को आपको इधर अटैच करना एक हाइड्रोजन पे. So like NHU, right? Then COCH3, ये वाला पार्ट को आप सीधा सीधा अटैच कर सकते हो. And by product will be this one, CH3CO के पास H आएगा, इधर का H, और ये वाला पार्ट जाके C double bond will directly go and we attack here. So what is this one? Amide is forming. Amides is forming. The name of this compound will be N-phenyl ethanamide. So names also I am saying ethanamide. Why we are calling it as N-phenyl? This we are taking it as substitution. This is the root word 1 and 2. 1 and 2. Okay. So N-phenyl. So what on the N-phenyl is there? So N-phenyl ethanamide, CH3CO NH2 is there. So this is the ethanamide. Ethanamide. If here phenyl group is there, N-phenyl ethanamide. If some substitution are there on this, so you have to put that in bracket, 4-chlorophenyl. So in bracket you have to put 4-chlorophenyl ethanamide. So that's how you have to write the IPC nomenclature. Next one is benzoylation. What is next one? Benzoylation. Benzoylation means the CO group which is attached to the benzene ring. The CO group which is attached to the benzene ring. Benzoyl group. Acetyl group means what? CH3CO. This is the acetyl group. Benzoyl group means what? This one, COCl. Benzoyl chloride. This we call it as a benzoyl chloride. The same one, earlier one जैसे हम लोग whatever you have seen, ऐसे इधर का Cl निकाल दो, इधर का एक हाइड्रोजन निकालो, ये C6H5CO को डायरेक्ट इसके साथ अटैच कर दो, amine के साथ. So you will get the N-ethyl benzamide. N का ऊपर क्या है? Ethyl benzamide. So benzamide is the main functional group. So इसको substitution ले रहे हैं हम लोग. So like that. Now regarding this alkylation we have studied, while at the preparation time we have seen this one. So what I have said, primary amines, if you react with the RX, nucleophilic substitution reactions will take place. जब तक के हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा तब तक अल्काइल ग्रुप से अटैक होते ही रहेगा. So you can end up with the quaternary ammonium salts. This we have studied. Why? Because nucleophilic substitution will take place. So whatever it is forming, this will go and attack on the another alkyl group. That's how you will get R3. Still, this will go and attack on the RX group. That's how R4. And so here it will end up, because here lone pair of electrons are not there. It's not a nucleophile. Because lone pairs. So till whenever the lone pair of electrons are exist, at that time that substitutions will take place. Okay, so what is the use of this quaternary ammonium salts? So by using this quaternary ammonium salts, elimination reactions can be takes place. Even aromatic amines also undergo alkylation process. So if you are having this NH2 aniline, so from here also you can replace these hydrogens with the alkyl groups. Here also alkyl groups can be formed, tertiary groups. Quaternary means this one, quaternary. Quaternary means 4 alkyl groups are there, salts. Positive is there, negative is there, salts. Aromatic amines also undergo alkylation process. This we have seen. Quaternary ammonium salts undergo elimination reaction. So to do elimination, how we do sometimes, see for example, CH3, CH2, OH is there. How we do elimination? This one. If you protonation by using this some H plus, you get H2O plus. So by that way you can eliminate this water molecule. You can eliminate that water because this is becoming the good leaving group. The same way, if you are having this amine, for example, CH3 is amine is there. What this one? Methyl.
methyl propylamine, ethanamine, 1 methyl ethanamine, or 2 N triethyl 2 propanamine. Like that also you can say this one. So basically this is a quaternary ammonium salt. For example, if I am having CH3 CH CH3 NH2 at second carbon I am having NH2. What I will do, I will make it as a quaternary salt by using some alkyl groups like nucleophilic substitution, how you are doing by using Rx. So like that, if you react with the CH3Cl or CH3B or anything, you will get the alkyl group here. एक हाइड्रोजन निकाला, so एक CH3, और एक हाइड्रोजन निकालो, एक CH3, और एक हाइड्रोजन भी आया, CH3. This is become positive. Charge is developing. What is happening here? Charge is developing. This will become easily leaving you. What it will become now? This will go. If that will go, what happens now? If that is going, sharing electrons are taken by nitrogen, so you will get the positive charge here. CH3 CH3. So to neutralize this one, इधर से एक हाइड्रोजन जाएगा. मैं इसको CH2H लिखता हूँ. ये वाला एक डबल बॉन्ड में यूज होगा. That's how you can get this type of propene alkene elimination reaction is taking place. This reaction is called the Hofmann elimination reaction. One named reaction it is. Okay, for your examination that much it's not important, but still you learn it. Hofmann elimination. Hofmann elimination by using some silver oxide, some salts oxides, silver oxide, metal oxides. If you do hydrolyzation, if you get this type of elimination reaction. Basically, this part is going. Positive charge will come to nullify this one. यहाँ से एक हाइड्रोजन चले जाएगा, हमें alkene मिलेगा. So it's good. So in this one, this elimination is a regioselective. Regioselective in the sense, whatever the alkene formed will be always less substituted, as shown in the following reaction. Usually, whatever you get, that alkene will be less substituted. The alkene, what you will get the less substituted alkene. This is opposite to the J Sevro. We get alkenes usually more substituted, but here you get less substituted alkene. I like that. Okay, if you are having here at the CH3, if you are having, for example, here some CH3, like this, if you are having, so this will not form. Alkene here will not form. If it will form, this will become more substituted. That is the reason that will form here. This will be less substituted. All are the hydrogens, but here only one hydrogen is there, like that. So in Hofmann elimination, if you want less substituted alkene, you can go by this method to get this type of alkenes. Okay, all these you can use in organic conversations, this step. Next, reactions with aldehydes and ketones. So what happens? This also we have discussed. If you are having the amine, so for example, this amine I am having C2H5 NH2. Short tricks I have said for all these things. We have discussed already. Where you have studied this in the aldehydes, you have studied. Again, you are studying the amine compounds. That's how, if you interrelate organic chemistry, if you read together, that will be easy for you. What this compound? Acetaldehyde or ethanol you can say. So what you have to do? Isko water nikal do seedha simply. Then what you have to do? A double bond nitrogen ko seedha attach karo. C2H5 N double bond C H3 hydrogen. Ethylenidine, ethylamine. Ethylamine, ethylenidine. So ethylenidine group means this one. Alkene is attaching, no, sir, that's why ethylenidine. And N it is there. So ethylenidine, ethylamine. So these names you don't worry much about. Okay, names you don't worry. You will get confused. Let it be. This type of will not ask in examination IUPAC. But simpler one, whatever I am saying, you should not forget. So here also water you remove simply and you add. This is the ketone. If you can remove, so what you can do? C2H5 and double bond C, CH3, CH3, like that. Okay, you will get isopropyl. This group is the isopropyl. Whenever something is attached to the second carbon, propyl, second carbon is attached to the functional group, we call it as isopropyl. Isopropyl. If this one is there, CH3, CH, Cl, CH3, this we can call it as isopropyl chloride. Isopropyl. Here it is there. Then propyl chloride. If it is attached to the terminal carbon, we call it as a propyl carbon. Okay. This is about the primary amines. So you can remove the primary amines only by using this way. But secondary amines also can be done. But in the case of secondary amines, what happens basically, whatever this alpha hydrogen is there, that will participate in the
reaction. Usually what happens, ये जो bond है, this is tautomerism will takes place. Tautomerism in the sense ये हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट होके इधर मिल जाता है, इधर आता है, वो शिफ्ट होते रहेगा. So this is called the tautomerism. Tautomerism, which you have studied in the class 11. Tautomerism. What happens? This proton is shifting from here to there. So how you can write? अगर मैंने ये हाइड्रोजन को शिफ्ट किया इधर, so I will get मैं इस CH2 को नीचे लाऊंगा, CH2. Okay, so what it is basically is happening, ये वाला मैं इधर शिफ्ट करूंगा इधर, so double bond is coming here, CH2. और इधर क्या आएगा हमें वो H, इसको मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इजी रहेगा निकालने के लिए. इधर दो हाइड्रोजन तो नहीं ऑक्सीजन निकालने के लिए, इसलिए व्हाट इट विल डू, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट रहेगा इधर, प्लस आप इधर NH CH3 CH3. ठीक है, अभी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, अभी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, H2O यू रिमूव, सो इसको जोड़ दो. सो व्हाट यू विल गेट नाउ, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 N CH3 CH3. At the end water you have to remove. So this is nothing but this only. मैंने CH2 इधर लिखा है, वो उधर लिखा है, सेम है, both are same only. This is second carbon only. Okay, for that one some dehydrating agent required. This is here they are taking PTS. So this PTS means the full form of this one is para-toluene sulfonic acid. Para-toluene, here it is not given, you can take it. Para-toluene sulfonic acid. Para-toluene sulfonic acid means this one only. Para-toluene sulfonic acid. CH3. Okay. Para-toluene sulfonic acid. This is also will be one of the good dehydrating agent, like P2O5 we have seen, like that. This is whenever you are doing PTSA you can write para-toluene sulfonic acid. So benzene sulfonic acid, it's not simple sulfonic acid, it is benzene sulfonic acid. Para-toluene benzene not required because toluene we are using, no. Okay, benzene not required. Para-toluene sulfonic acid, that's it. Okay, next reactions. Are you able to hear me, Vidisha? Yes. Okay, all these reactions we have discussed already. All these reactions we have discussed already. So that is the reason you have to practice those things yourself only. What is the next reaction that we will see now? What is happening? Okay. Next one, reactions with nitrous acid. Reactions with nitrous acid. See, we have seen a reagent like HNO3 plus NaNO2. Where we have used this one, NaNO2 HCl, sorry, NaNO2 HCl. Where we have used this reagent, Aishwarya, where we have used this reagent, Aishwarya? Aishwarya. Vidisha, where this reagent we have used to prepare which type of compounds we have used this one? Diazonium salts. So diazonium salts preparation we have used. So what is diazonium salts? When NH2 is there. So to make N2 plus Cl minus, Aishwarya, are you able to hear me? Aishwarya. Yes, sir. So why you are unable to answer? These are the so many times we are using. So where we are using? To the amine, to convert to the diazonium salts, this reagent we are using, NaNO2 HCl. So what is basically happens? Here, Na is the positive part, NO2 is the negative part. In HCl, H is the positive part, Cl minus is the negative part. So H and NO2 mix together. H and NO2. So HNO2 you are generating basically. This is what getting the reaction. This is actually you study in the mechanism. So this is removed from the syllabus. So since we are going to read about the nitrous acid is this one only, HNO2. HNO2 is called the nitrous acid, HNO2. HNO3 means nitric acid. HNO3 means what? Nitric acid. HNO2 means nitrous acid. So it is simple now. It is clear to you now. So if you use HNO2, you get the diazonium salts, right? So what happens when you use this nitrous acid? That we will see, because it is not available as such. We have to prepare. So that is the reason in the reaction medium to prepare NaNO2 HCl we were
taking. Different classes of amines react with HNO2 to yield different type of products. For example, first degree amines react with HNO2 to yield alcohols according to the following reactions. So for aliphatic alcohols, you can prepare the alcohols. So basically what is happening here, for example, this you are having C2H5 and H2. If you react HNO2, you get the diageneum salts of that one. N2 plus Cl minus. Now we know these diageneum salts can be converted into the different functional group. But usually aliphatic compounds you cannot convert into the Cl, Br like that. But alcohols this type of, if you put H2O or if you put OH, water, you can get alcohols easily. But aromatic compounds, much it is useful. Aromatic compounds, if you want convert NH to Cl, so you can put simply HNO to N2 plus Cl minus. If you put CuCl, you will get the chloro. That is the Sandmeyer reaction. What is the name of the reaction? That is the Sandmeyer reaction. Okay, so you can prepare this diageneum salts. If aliphatic amines are there, you get the alcohol. If it is aromatic amines, you can get the diageneum salts, which are the colored. Basically, these are the colored compounds. Yellow colored, orange colored, this type of diageneum. Different functional groups can be prepared. So further, whatever the functional group you can use. So here HNO2, or you can use NaNO2 HCl. If you give, they give in examination HNO2, don't get confused. This is nothing but NaNO2 HCl, only HNO2. Okay, you are having NH2, that's how N2 plus Cl minus you are forming. Basically, what is happening here? N2 plus Cl minus. Secondary amines react with HNO2 to form nitrosoamines. One word is coming here, nitrosoamines, that are insoluble in aqueous solution. So those salts are not, those compounds are nitroso. These compounds are not soluble in the aqueous solution. So basically what is happening here, water molecule is going, water molecule, इधर से एक H2O निकाल दो, इधर से एक OH निकालो, OH निकालो, इधर से एक H निकालो, H वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इधर से H लाओ, इधर से OH लाओ, तो क्या बचा है? इधर OH लाया तो NO बचा है. What you are here? Nitroso group, nitroso you are having. So NO नाइट्रोजन को अटैच करना, N nitroso, this is the nitroso, N nitroso, N methyl aniline. It's not amine, it is aniline. What it is? Aniline. You have to correct whenever such mistakes are there. What I was doing, what I have done, H I have taken, OH I have taken from HNO2, then I have added. But here N2 plus Cl minus will form. In the presence of NaNO2 HCl, you don't need to put both. Only one you can put. NaNO2 HCl or you put, or HNO2 you put. No need to put both. Okay. To form the salts, we required HCl. That is the reason they have shown here also. So instead of placing this one, you can show this one only. NaNO2 HCl. You don't need to write this one. This one also you can write only. So salts, counter ion we required. So that where from that comes? From the hydrochloric acid. Next, tertiary amines. This is the secondary amines. This is the primary amines. In tertiary amines case, what happens? Tertiary amines react with the HNO2 to form nitrites, shown as. So nitrites will form here. Basically, what happens here? HNO2, this acid, this is the base. That means that NH plus form होगा. ये वाला acid form हो जाएगा. And ये NO2 minus as a counter ion type करेगा. NO2. This is NO2. It's not NO3 minus. Because मेरा पास NO2 है. इधर H what it will form? It will add to this one because ये base है. This is acid है. So both will combine. So because this is tertiary. Otherwise, if it is a primary case, HNO2, what happens? You get this diageneum salts. If your water is there, you get the alcohol quickly. If it is aliphatic, if it is aromatic, you get the diageneum salts, stable diageneum salts. These are the stable. ये stable नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा? तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके alcohols बन जाएगा. Any nucleophile you can add, but most probably alcohols के लिए आप. But aromatic में ये ज्यादा use करते हैं diageneum salts. Okay, so this is about this one. Next, reaction with COCl2. So COCl2 called phosgene gas. What it is? Phosgene gas, COCl2. Okay, highly poisonous gas. Okay, this is used in the World War also. First World War also this gas is used. So urea is formed when amines react with the phosgene gas. Urea is formed.
यूरिया। सो दो एमीन ग्रुप्स क्या रहेगा, COCl है। इस साइड से भी तुम रिप्लेस कर सकते हो, इस साइड से भी तुम रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? इस साइड अगर फॉर एग्जांपल मैंने RnH2, कोई भी RnH2 लाया, two molecules of NH2 you bring, two molecules of NH2 you bring, so you remove one hydrogen and one chlorine, one hydrogen, so two hydrogen, one hydrogen I am removing. From here one hydrogen you remove with one Cl and you add it, so what you will get here, RNHCO, इसको ऐड कर रहा हूं मैं सीधा क्योंकि HCl निकाल रहा हूं, so ये नाइट्रोजन को सीधा CO के अटैच कर दो, NHCO NHR. This is the urea function group. This is only the urea. You have to remove HCl, H2O. These reactions are called the condensed reactions. So this is just now we have discussed. इस साइड से भी RNH अटैच हो गया, two molecules of RNH. इस साइड से भी HCl निकालो, RNH को ऐड करो. Secondary amines also will be react and urea will be formed, which is used mostly in the way where this is used in the pesticides. It is mostly used urea. Next, oxidation. Oxidation means क्या है? Introduction of oxygen. So oxidation reaction. RNH2. So पूरा हाइड्रोजन निकालो. So कौन सा सिर्फ RNO के साथ कौन सा मेजर कंपाउंड आप लोग अभी तक पढ़ के आए? नाइट्रो. So at the end you can get the nitro compounds. Oxidation, you have to introduce oxygen. हाइड्रोजन को निकालो, ऑक्सीजन को ऐड करो. These reactions are the oxidation reaction. Here CH3Ca NH2 or C2H2NH2, whatever you take, if you put oxidizing agents like KMnO4, Na2Cr2O7, K2Cr2O7, such type of any oxidizing agent, if you take, you get the nitro. So in between intermediates also you get, okay, NH2 RNH2. So पहले ऑक्सीजन एक इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद हाइड्रोजन जाएगा, तुम्हारे पास सिर्फ नाइट्रोसो कंपाउंड मिलेगा RNO. फर्दर वो ऑक्सीडाइज होके ये सब स्टेबल नहीं रहते ज्यादा, सो दिस वन विल बी द स्टेबल कंपाउंड. दैट्स हाउ एट द एंड यू विल गेट द नाइट्रो कंपाउंड्स. दिस वन amines are oxidized to hydroxyl amines. Amines are oxidized to hydroxylamines. This one is the hydroxylamine. Nitroso compounds and nitro compounds. So nitroso compound means this one is called the nitroso compound, this one is the nitro compound, depending upon the reagent how you are. So oxidizing agent you are taking here. अगर आपको reduce करना है, so क्या करना है? RNO2 RNH2. So we have discussed, आप palladium carbon हाइड्रोजन डाल दो, palladium हाइड्रोजन, निकल हाइड्रोजन, और ZnCl2 मेटल और हाइड्रोजन डाल दो, HCl, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, HCl डालो, मेटल सॉल्ट्स प्लस HCl. देन RNO2 RH2 चाहिए तो रिडक्शन करो, और ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीडेशन करो. ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स इधर डालो, रिडक्शन रिएजेंट्स उधर चाहिए तो उधर डालो. So reagents you should know, okay, all the reagents you categorize and you have to learn that one where you have to use the oxidization. Okay, I will share you some okay, one any notes important, whatever that particular page I will share with you. But since we are discussing, you also can categorize in whenever we are getting KMnO4, you know very well now, strong oxidizing agent. अगर आपको NH2 हाइड्रोजन गायब हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, कुछ भी ऑक्सीडेशन एजेंट पुट अप कर दो. आपको कब ध्यान देना है? whenever you are preparing the aldehydes, क्योंकि aldehydes फिर एसिड्स बन जाएगा, तब केसेस में आपको सेलेक्टिव रिएजेंट्स यूज करना पड़ेगा, लाइक CrO3, PCC, उस टाइप ऑफ का. सो इधर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यू कैन पुट इट. कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन गिव्स पैराबेंजोक्विनोन एज शोन बिलो. ओके, अंदर का जो हाइड्रोजन है वो जा रहा है, आपको पूरा ये गायब हो रहा है इन द स्ट्रॉन्ग K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड कंडीशन में आपको मिल रहा है पैराबेंजोक्विनोन. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द पैराबेंजोक्विनोन. क्विनोन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द पैराबेंजोक्विनोन. क्या ये पूरा बेंजीन एरोमेटाइजेशन जा रहा है? इसमें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ये, एक्चुअली अगर बोले एरोमेटिक है, बट दिस वन इज, it will not behave as like as aromatic compounds. Alternate conjugation double bonds nahi hai inside. Parabenzoquinone. Next, Hinsberg test. Are you able to hear me clearly, Aishwarya? Yes, sir. Did you understand what? So all these reactions we have discussed already.
इट्स नॉट समथिंग न्यू, वी हैव व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑल्डिहाइड्स के क्या रिएक्शंस होता है, कीटो के साथ क्या रिएक्शंस होता है, ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल सी द हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या है वो देखेंगे, ये अभी तक नहीं पढ़ा है, हम लोग अभी पढ़ेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। Where it is used basically, Hinsberg. So to identify first degree amines, second degree amines, tertiary amines, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट को यूज करते हैं। क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट? व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या है वो स्ट्रक्चर आप सब लोग लिख दो, बेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप, सल्फोनाइल क्लोराइड ये ग्रुप है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आपको अभी तक अंदाजा आ गया होगा आपको कौन सा ग्रुप निकालना है, अगर एमीन्स के साथ रिएक्ट करके इसमें से कौन सा ग्रुप निकालना है ऐश्वर्या इसमें से? Cl. हाँ, Cl निकालने का और एमीन को इधर जोड़ने का, सल्फोनामाइड बनाने का हमें। हिंसबर्ग टेस्ट वही होता है, हिंसबर्ग टेस्ट। जैसे हम लोग HNO2 में जैसे कैसे देखा है, प्राइमरी को अलग आया, सेकेंडरी को नाइट्रस कंपाउंड आया, टर्शियरी में जैसे सॉल्ट्स आया क्योंकि टर्शियरी के पास हाइड्रोजन है नहीं, ऐसे इसमें भी अलग अलग वे दैट विल रिएक्ट बिकॉज प्राइमरी वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन। सो आप इधर डाल के SO2 NH मिलेगा, अगर एक ही है सो आपको N एक ही कंपाउंड एक नाइट्रोजन अटैच होगा, सेकेंडरी उसका सॉल्युबिलिटी नेचर अलग रहते हैं, like that. So Hinsberg test, this is the Hinsberg reagent. What it is reagent? Very very important. Whenever distinguished tests are coming, those are very very important. Hinsberg test. Okay, all these reactions simple. This simple they will not ask much. But जो difficult है, not difficult. So whatever it's not coming commonly, that they will ask. क्योंकि ये इधर से ज्यादा पूछने का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि दिस यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन एसिड्स, ऑल्डिहाइड्स, कीटोन्स के साथ। But a Hinsberg test, where it is used that you should know. In this test, different classes of amines are treated with benzene sulfonyl chloride, and hence different products are formed. Different type of products will form. Okay. So, for example, first degree amines forms product which on acidification in aqueous KOH gives insoluble material. So whatever the amide you are getting, so for example, this one, I have reacted with the amine, for example, amine, which is NH2R. So what product you will get here? This product you will get here. SO2 NHR. Okay, NH, एक HCl को निकाला मैंने. This product you get. This proton is acidic proton basically. This proton is acidic proton. So this will be soluble in solvents, organic solvents. But if you want to check in water, it will not be soluble. So ये कब soluble रहेगा पानी में? If we add a base, some base, you can make it as a salt. For example, KOH के साथ अगर treat किया तो ये प्रोटॉन गायब हो जाएगा. प्रोटॉन गायब होके क्या बनेगा? उधर N- मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग बाय OH, सो N- काउंटर है इधर K+ मिलेगा. सो सॉल्ट्स है, ये पानी में soluble रहेगा. सो बेस्ड अपॉन solubility you can find it out primary, secondary or tertiary amines you can identify. What happens with the primary amines? So this we have seen now. HCl को हटा दो, एक H को हटा दो, इधर से एक Cl, HCl का हटा दो, अटैच करो. इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है? यू कैन मेक द एनियन हियर. बेस को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोटॉन है इसके पास, प्राइमरी के पास. सो ड्यू टू दैट वन व्हाट हैपेंस, दिस विल बी सॉल्ट, व्हाटएवर यू विल फॉर्म दैट विल बी सॉल्युबल. अगर उसको फिर से एसिड डालो तो फिर ये इधर से फिर प्रोटॉन आ जाएगा, फिर तुम्हें इनसॉल्युबल, लाइक दैट. Insoluble in water, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये soluble in water. Okay, like that. If second degree amines react with benzene sulfonyl chloride to form product which is insoluble in KOH. KOH का जो solution में है वो insoluble नहीं होगा. क्यों insoluble नहीं होगा? क्योंकि इस product के पास H ही नहीं है secondary amine के साथ, क्योंकि ये HCl जा रहा है HCl,
सो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है विच इज अ टर्शियरी कंपाउंड, जो भी बन रहा है उसके पास H ही नहीं है तो KOH के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा तो उसके अंदर सॉल्युबल ही नहीं होगा KOH सॉल्यूशन में। बट ये सॉल्युबल है, which one, whatever the product you are getting is salts, this will not soluble because here proton is not there to abstract by base, then you can say it is a second degree amine if it is whatever the product that is not soluble with the KOH solution. If soluble with the KOH solution, that is the primary. So what is the case with the test? So product what you are doing, simply H and Cl you are removing and you are adding. Fine. Now what happens with the tertiary? We will see this one. इसमें कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन ही नहीं होगा। इसमें फर्स्ट स्टेप में रिएक्शंस हो रहा है दोनों में, सेकंड KOH में डाल के हम लोग सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, बट इस केस में रिएक्शन ही नहीं होता है। जैसे तुम लोग सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टर्शियरी अमीन के साथ डाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा, तो नथिंग यू विल सी। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। सो दिस विल बी इनसॉल्युबल इन KOH सॉल्यूशन। ये वाला क्या करेगा, ये वाला सॉल्ट्स बनके HCl के साथ ये वाला पार्ट सॉल्युबल हो सकता है, सिर्फ ये वाला पार्ट, बट ये दोनों अटैच ही नहीं हो रहा है। यू कैन सी सिंपली व्हाट आई एम डूइंग R3N, I like that, soluble some salts. Okay, I like that HCl, this is not R, this is one is H plus, एक R तो नहीं डाल रहे हम लोग, इसका HCl डाल के हम इसके साथ सॉल्ट बनके वो सॉल्युबल हो सकता है। बेसिकली कहने का ये है कि ये रिएक्शन ही नहीं होगा फर्स्ट स्टेप में। In case of tertiary amine, an insoluble compound in KOH which is dissolved by the addition of acid, क्योंकि ये insoluble है, ये insoluble है, ये अलग टाइप ऑफ का कंपाउंड है, अलग कंपाउंड है, so that is insoluble। बट अगर एसिड ऐड करो तो क्या बन जाएगा, वो सॉल्ट्स बन के डिसॉल्व हो जाएगा। लाइक दैट यू कैन आइडेंटिफाई बेस्ड अपॉन दिस वन, यू कैन डिस्टिंग्विश व्हिच वन इज द प्राइमरी amine, which one is the secondary, which one is the tertiary. Is it clear the concept of till now whatever we have discussed? Is it clear, Aishwarya? Or if you are having any doubt, you can ask me. Vidisha. Vidisha, are you able to hear me, Vidisha? Yes, sir. Is it clear the concept of till now which we have discussed? Sir, so Yes, yes. Rohini. SO2 yes, ask me, Rohini. SO2Cl के पास प्लस लिखा RAN है क्या सर, वो R3N है सर? ये वाला ये टर्शियरी अमीन, ये टर्शियरी अमीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये R3 है, दिस वन इज R3N। इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा ना, HCl ही नहीं जाएगा ना, रोहिणी, आर यू गेटिंग? यस सर। ये R3N, R3N। नेक्स्ट कार्बाइल अमीन रिएक्शन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Hinsberg reaction is very very important, कार्बाइल अमीन reaction also very very important. By using this reaction also you can identify whether primary amines are present or not. Only primary amines, they only will react this one, they will give some new functional group when you react with the isocyanide. When you react with the isocyanide, that will give isocyanide when you take the primary amine. When you take the primary amine, if you react that one with the chloroform and potassium hydroxide, these are the reagent, CHCl3 and KOH is a reagent. If you put chloroform and KOH, ये पूरा हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, हाइड्रोजन पूरा गायब हो जाएगा। आपको इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर कितने Cl है, 3 Cl है, और इधर एक हाइड्रोजन है, सो 3 हाइड्रोजन है, टोटल 3 हाइड्रोजन है, 3 Cl है, सो ये सब मिलके 3 HCl है। ओके, इधर K कितने K है, इधर 3 K है, और OH कितने हैं, 3 OH है। ओके, इसमें क्या होता है, ये 3H 3 OH, मतलब 3H प्लस आयंस 3 OH माइनस आयंस, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म। ये 3 पोटेशियम 3 Cl विल फॉर्म 3 KCl। सो अभी क्या बचा है आपके पास, सिर्फ कार्बन बचा है। वो कार्बन किससे ऐड होता है, बेसिकली नाइट्रोजन के साथ ऐड होता है। ओके, सो मैकेनिज्म यू डोंट वेरी मच अबाउट दिस वन। इफ यू आर पुटिंग this one CHCl3KOH to the RNH2, you will get the alkyl isocyanide RNC. इसका स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं, isocyanide, this is the isomer of cyanide only,
R N C, N प्लस सी माइनस इस फॉर्म में रहते हैं और वो रेजोनेंस में रहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास 4 है ना, आर एन सी आइसोसाइनेट। ये न्यूक्लियोफाइल कहीं पे भी रिएक्ट करना है तो इधर से अटैक करेगा वो। This we have seen in the case of coordination compounds and the where a different type of nucleophilic substitutions we have seen. What functional group it is? Isocyanate functional group. NC. CN is nitrile. CN we call it as a nitrile function group. Nitrile or cyano as a common name cyano. If NC is there, means which is attached to the nitro, we call it as isocyanate. 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 It is basically structure will be like that. आपको क्या करना है, ये रिएजेंट है तो R N के पास सीधा कार्बन आके अटैच कर दो, alkyl isocyanide. For example, all of you write this one CH. What is the product of this one? All of you write and show me. CH3 NH2 plus CHCl3 plus KOH. इसका प्रोडक्ट क्या है? OH प्लस CHCl3 प्लस KOH. इसका प्रोडक्ट क्या है? दोनों का प्रोडक्ट लिख दो और प्रोडक्ट्स क्या है बता दो. I will be happy someone will tell the answer for this one also. If you remember, I will be most happy. कोई भी इसका क्या आंसर है तो. This is one of the named reaction which you have studied in the phenol. पहले इसका लिख दो क्या प्रोडक्ट मिलेगा और उसके बाद इसका लिख दो. What product will form here? CH3NC. CH3NC basically plus 3KCl plus 3H2O. You don't worry much about this one, but this one. The name of this compound is methyl isocyanide. Methyl isocyanide. Methyl isocyanide. So what is this named reaction? Let us check what is the reaction of this one. Riemann-Tiemann reaction. क्या है Riemann-Tiemann reaction? क्या है this very very important reaction? ये सब आप लोग को पता होना चाहिए यार. जो भी मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बोल रहा हूं आप लोग को याद होना चाहिए. वो उसी दिन आप लोग बैठ के जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं फिर भी आपको याद नहीं है तो मैं क्या बताऊं. फिनोल CHCl3 KOH ले लो तो एल्डिहाइड मिल जाएगा आपको अल्फा पोजीशन पे फिनोल का केस में. इन द केस ऑफ CHCl3 if I take CCl4 and KOH, CCl3 and CCl4 and KOH, I will get OH CO O minus K plus because base I am having. There's nothing but for acid it is. So simply I will put acid H plus Cl minus. So I will get this one OH CO OH. Guys, whatever I am saying very very important reaction. उसी दिन आप लिख के practice कर दो please. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज बहुत सारा टॉपिक्स डिस्कस किया फिर भी मैंने क्या इंपॉर्टेंट बोला, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड हिंसबर्ग रिएक्शन, कार्बालाइमिन रिएक्शन. लाइक दैट एवरी क्लास आई एम सेइंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वन. आपको उसी दिन प्रैक्टिस करना है. आप ये एक वीक के बाद प्रैक्टिस करेगा तो आप भूल गए होगा मैंने क्या ट्रिक्स बताया, क्या समझा, आप भूल गए होंगे. इसलिए आप ये उसी दिन लिख के प्रैक्टिस करो 1 घंटा, हाफ एन आवर, बस हाफ एन आवर, क्योंकि नोट्स मैं पहले शेयर कर रहा हूं आपसे. वेरी ओके. नेक्स्ट electrophilic substitution reactions. The last topic is electrophilic substitution reaction from this chapter, so we will finish it off this chapter. Okay, first and foremost important thing you have to remember for the electrophilic substitution of reaction. See where you are. Okay, can you hear me Aishwarya? Yes sir. Can you hear me Vidisha? Yes sir. Rohini, can you hear me? Yes sir. Okay, so it is clear now what is Riemann-Tiemann reaction means. You should not forget whenever I ask the next. Sir, in CH3NC, N should have 3 bonds. N should have 3 bonds. That is the reason charge I have written. आप नहीं देखा क्या मैंने
क्या लिखा है CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C N प्लस C माइनस, ये लिखा है मैंने. If you didn't see, that means your network issue. Okay, so positive charge I have written, Vidisha, and that rotates. What I said, नाइट्रोजन के पास अगर 4 बॉन्ड्स है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है और वो रेजोनेंस में घूमता रहता है. So this is what the isocyanate structure will be. Okay, is it clear, Vidisha? Yes, sir. Now electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Substitution in the electrophilic substitution in the aniline compounds, it is something different. It is ortho and para directing group. But here, in the case of anilines, you cannot do the Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. So what are the Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. कौन सा reagent use करते हैं Friedel-Crafts alkylation के लिए? Kenny-Lewis acid, AlCl3, FeCl3. And what you use? AlCl3 and any alkyl halide, RX. So positive. Electrophile. Here from here you get the R plus. Friedel-Crafts halogenation. What is Friedel-Crafts halogenation? X2. That's nothing but XX bond. XX. इसमें से आपको क्या मिलेगा? X positive मिलेगा. You will get the X positive. Friedel-Crafts halogenation के लिए ऐसे लेना आपको. यानी तो Friedel-Crafts acylation, any Lewis acid, not only AlCl3, you can take FeCl3, you can take ZnCl2. All are the Lewis acids only, metal salts. These only, not all. Okay. Along with this one, if you take CH3COCl, you get the CH3CO plus group. So ये all these plus groups आपको ortho and para groups में लगाना है. But इस केस में, एनिलीन्स का केस में, ये कोई भी रिएक्शंस नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? Because the reason is that aniline is लुईस बेस है, ये लुईस बेस है और ये LCl3 क्या है? लुईस एसिड है. तो दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बना जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है रिंग के अंदर, क्योंकि ये हाईली डेफिशिएंट है कंपेयर्ड विद दिस वन. इसका वजह से क्या हो रहा है? ये रिएक्शंस कोई भी नहीं होगा. बट स्टिल यू कैन डू दी हैलोजिनेशंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऑल दोस रिएक्शंस यू कैन डू. How you can do? For example, if I want the compound of NH2, if I want NH2 to the, if I want bromine here, if I want bromine here, I will take Br2 in presence of some acetic acid or some water, bromine water. If you bromine water also good reagent. Since this is the most reactive, आप इसको इधर ड्रॉप नहीं कर सकते हो. NH2 ये आपको और दो भी. ओके, यही मिक्सचर नहीं, आपको और भी मिक्सचर मिल सकता है. क्या है? इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, बल्कि सिंस दिस इज द मोस्ट डोनेटिंग नेचर, यू विल गेट द कंपाउंड्स ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. क्या बनेगा? आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलेगा. तो आपको ये कैसे इफेक्ट सेलेक्टिवली अगर आपको ये चाहिए, इफ यू वांट ब्रोमो सेलेक्टिवली, सो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस, यू हैव टू डू, इसको अमाइड बना सकते हो. इस NH2 को आप सिंपली कोई भी अमाइड एक के साथ रिएक्ट, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो, CH3COCl, एंड बेस के जगह में, बेस टू अब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, the presence of NaOH or KOH, what you will get? ACl जाएगा, इधर से हाइड्रोजन जाएगा, so you will get this one, NHCOCH3. you get this compound amide. so क्यों ये ग्रुप आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो? क्यों ऐड करना है सर ये? क्योंकि ये क्या करेगा? COCH3 ये विथड्रॉइंग है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इतना इजीली नहीं जाएगा. अभी इस साइड भी एक ही स्थिर रहेगा, इस साइड भी एक ही स्थिर रहेगा, उसका वजह से इसका रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा. अभी इसका ऊपर तुम Br2 डालो, सो यू विल गेट द selectively product bromo, major compound, you will get the bromo here. Are you understanding what my point?
Here electrophilic substitutions are something different, as like it's not like as a others. You are making it as a acetanilide. We call it as a acetanilide. What we call it as, this compound is called the acetanilide. This compound is the acetanilide. So that's how para-bromo compound you can get. और ब्रोमो इस साइड से आर्थो पोजीशन पे आने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा हिंडरेंस है, ये ग्रुप हिंडर करेगा. जैसे हम फर्स्ट केस में आर्थोस आ रहा है इधर, सो ये ग्रुप बल्कियर ग्रुप है, ये क्या है, छोटा साइज है. ये अभी क्या हो गया, COCH फिर बड़ा हो गया, सो आर्थो पोजीशन पे नहीं आएगा स्टीरिक हिंड्रेंस का वजह से. लेस प्रोडक्ट यू विल गेट, बट यू विल गेट द ब्रोमो एट मेटा पोजीशन. Okay, is it clear? All of you type in chat message. If it is not clear, I will explain you. Aishwarya is saying yes. Vidisha and Rohini, please type. Vidisha. Okay, very good. If you are having doubt, you can ask me. So nitration. Nitration is also something different. So इसका प्रोडक्ट आप लोग लिख दो जल्दी इसका प्रोडक्ट लिख दो. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स दे आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका प्रोडक्ट आप लोग जल्दी नोट्स में लिख दो और दिखाओ मुझे, या नहीं तो आप डायरेक्ट IUPAC नेम लिख दो चैट मैसेज में जल्दी. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. ओके, सो व्हाट द ट्रिकी दैट आई विल एक्सप्लेन एनी हाउ, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. नाइट्रोएनिलीन कौन सा जगह में, नाइट्रोएनिलीन पोजीशन इज इंपॉर्टेंट. आर्दो नाइट्रोएनिलीन मिलेगा या पैरा नाइट्रो मेटा नाइट्रोएनिलीन, कौन सा मिलेगा. रोहिणी इज सेइंग मेटा. मेरी माँ, मेटा कैसे मिलेगा इसमें, एज ए कॉमन बता दो. कॉमनली NH2 डोनेटिंग ग्रुप है, तो आर्थो पैरा मिलना चाहिए, तुम्हें मेटा क्यों मिल रहा है. रोहिणी अनम्यूट योरसेल्फ. मेटा यू आर सेइंग करेक्ट, बट रीजन बता दो मुझे, क्योंकि मैंने ट्रिकी बोला इसलिए तुम मेटा बोल रहे हो, राइट. ऐश्वर्या प्रोडक्ट्स लिख दो, दिखाओ मुझे कैमरा ऑन करके. विदिशा व्हाट यू हैव रिटन, शो मी. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज द प्रोडक्ट, वेरी गुड. हाँ, इसमें थोड़ा ट्रिकी है, वो देखेंगे. ऐश्वर्या व्हाट प्रोडक्ट्स यू हैव रिटन, शो मी. रोहिणी ये मेटा क्यों आ रहा है. रोहिणी ये कौन सा ग्रुप है, NH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा क्यों लिख रहे हो तुम. रोहिणी कैन यू एक्सप्लेन द रीजन यू एक्सप्लेन. अनम्यूट योरसेल्फ रोहिणी. ये NH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये कौन सा रिएजेंट है, NO2 प्लस जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किधर होता है, ये नहीं तो आर्थो पे होता है, नहीं तो पैरा में होता है. वेरी गुड ऐश्वर्या, वेरी गुड ऐश्वर्या. रोहिणी तुम क्यों मेटा लिखा है. रोहिणी रीजन बता दो मुझे. हाँ यार, ये ऐसे मिस्टेक्स मत करो यार प्लीज. अगर रीजन पता है तो बता दो मुझे. एज ए जनरली आई एम आस्किंग. आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तुम आर्थो और मेटा मिक्सचर लिख रहे हो यार. गुस्सा, बहुत पेशेंसली बता रहा हूं आपको मैं, बट फिर भी आप लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो. So this is the NOT, it's okay. So many times we are discussing why it is only because so many times we are discussing आर्थो पैरा डायरेक्टिंग. मैंने कभी बोला है क्या आर्थो मेटा डायरेक्टिंग, नहीं ना. या पैरा मेटा डायरेक्टिंग कभी बोला है, नहीं ना. आप ये लिख दो. अगर रीजन पता है, मेटा फॉर्म होता है इसमें, आई एम नॉट सेइंग मेटा विल नॉट फॉर्म, बट रीजन पता है तो बताओ. बट आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों हो रहा है. दैट इज ओनली द माय कंसर्न. पैरा नाइट्रो एंड आर्थो नाइट्रो you will get NH2 and NO2 because why, this is the ortho para directing group. एक चीज आपको ध्यान रखना है इसमें ट्रिकी क्या है. You are using acids. HNO3 is also acid and H2SO4 is also acid.
सो ये एसिड है, ये बेस है। सो H2SO4 मीन्स क्या है, वो H प्लस देगा, H प्लस। तो ये क्या करेगा NH2, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंस्टेड ऑफ इधर भेजने से वो पहले इसको दे देगा, H प्लस को, H plus को दे देगा. So due to that one, what you will get here, anilinium ions you will get. What you will get? A lone pair of electron that is giving to the H plus. So due to that one, what happens? NH3 plus will form. NH3 plus will form. And HSO4 minus like that. So also it is forming. So अभी क्या हो गया इधर? इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे दिया H प्लस को, एसिड को दे दिया है. ठीक है, उसका वजह से क्या हो जाएगा, अभी ये विथड्रॉइंग ग्रुप से एक्ट करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. सो अभी हमको NO2 मेटा पोजीशन पे भी जाएगा. ओके, सो व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस रिएक्शन, या सच अगर रिएक्शन कर दो तो जब तक वो सॉल्ट्स बनेगा तब तक वो तुरंत रिएक्ट होके तुम्हें R2 मेटा, R2 पैरा मिल जाएगा. वंस सॉल्ट्स भी फॉर्म हो रहा है देन मेटा भी मिलेगा. इसका मतलब आपको अगर इसके साथ अगर रिएक्शन करो, यू विल गेट R2 प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट, 3 यू विल गेट विद द गुड रेशियो, अच्छे परसेंटेज से आपको मिलेगा. अर्लियर केसेस क्या है, सिर्फ R2 एंड पैरा, उसमें भी पैरा मेजर मिलता था 90%, 95% पैरा R2. अभी इस केस में क्या है, मेटा विल बी मेजर. क्यों? रीजन इज दैट ये सॉल्ट्स बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं. पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब खींच रहे हैं, उसका वजह से वो मेटा पे भी जा रहा है. ये सॉल्ट्स बनने के लिए टाइम लगेगा थोड़ी देर ये रिएजेंट डालने में. सो मीनवाइल ये हाईली रिएक्टिव है, तब तक R2 पैरा भी थोड़ा बन जाएगा और सॉल्ट वाला सॉल्ट बनने के बाद आपको मेटा मिलेगा. इसलिए आपको R2 मिलेगा, पैरा मिलेगा, मेटा मिलेगा, सब मिक्सचर मिलेगा. Is it clear? All of you type in chat message. That's why yes, it is clear. So you can see here how much you are getting. So major you are getting the para still 51% in the presence of concentrated HNO3 and H2SO4. You get 51. Meta percent also you are getting 47%. So here para and meta is major. क्योंकि salts बन रहा है. R2 2%. Only R2 you are getting 2%. So this is what the important thing here. So you are getting the major one. अभी आपको पैरा मेजर, सर मुझे 95% पैरा नाइट्रो चाहिए. So उसके लिए आपको क्या करना है? Is it clear? All of you, क्यों उधर मेटा भी बन रहा है? All of you type in chat message. This question they ask in examination. कुछ reasoning question. Yes, Aishwarya is understood. Vidisha, why it is going to the meta? Rohini, all of you type here, please. रोहिणी सेइंग यस. ओके, नाउ मुझे पैरा ही चाहिए, मुझे पैरा नाइट्रो ही चाहिए. तो मुझे क्या करना है, देखो ये सब ऑर्गेनिक कन्वर्सेशंस में भी आपको यूज करना है. ठीक है, NH2 है, NH2 है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डीएक्टिवेट. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं H प्लस को देना नहीं चाहता हूं मैं. तो उसके लिए इसको डीएक्टिवेट करूंगा. उसके लिए मैं क्या करना है, उसको CH3COCl अमाइड बनाऊंगा उसको. तो उसका वजह से मुझे क्या मिलेगा इधर, आई विल गेट हियर NHCOCH3. क्लियर, HCl निकल रहा है, एक हाइड्रोजन इधर से, एक Cl इधर से. आई एम रिमूविंग HCl. ओके, नाउ इट इज deactivated. Now this lone pair of electrons are pulling this side and this side. This will not give easily to the acid now. So if you do the nitration at this stage, if you do the nitration at this stage, HNO3 H2SO4, you will get the para as a major product. You will get the para as a major compound. क्यों? क्योंकि इधर H3 प्लस सॉल्ट्स नहीं बन रहा है, हमें इधर कार NH2 प्लस सॉल्ट्स वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि ये डीएक्टिवेशन हो गया अभी, क्योंकि इधर विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच कर दिया मैंने पहले रिएक्शन का पहले. सो इस साइड भी खींच रहे इलेक्ट्रॉन्स, इस साइड भी खींच रहे हैं, तो फ्री नहीं है H प्लस को देने के लिए. Now if I do this reaction, I will get major at para nitro. What is the name of this compound? This is called the acetanilide. What is this is called the acetanilide? What is this is called the para nitro acetanilide. Nitro. Now मुझे ये मीन चाहिए. Okay, in examination they ask aniline to para nitro aniline. So आपको ये कन्वर्सेशन पूछा है.
aniline too, and this is one of the important conversation too. It is important conversation है ये, इससे ये कैसे कन्वर्ट, आप ये सभी स्टेप्स लिखना है आपको, ये ग्रुप। सो अभी ये ग्रुप निकालना है मुझे। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इधर हाइड्रोजन चाहिए, इस साइड OH चाहिए। इसका मतलब क्या है, वाटर ऐड करो। सिंपल है, वाटर ऐड मत करो, बेस भी ले लो। हाइड्रोलिसिस एक्वेस मीडियम या एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड ऑलवेज। एसिडिक मीडियम थोड़ा हार्श है, ब्रेक करने के लिए एस्टर्स अमाइड्स ये सब भी ब्रेक कर सकते हो। सो बेसिक मीडियम में थोड़ा आराम से आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें से आराम से OH मिल जाता है। तो आप OH इस साइड दे दो, इस साइड से एक H दे दो, हाइड्रोलिसिस यू आर डूइंग। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग द पैरानाइट्रोएमीन। All of you type in chat message. Yes, sir, that is concept is clear to us. Yes or no. If you are having a doubt, please clear, because it is important. It is important for the examination. उधर आपको कुछ doubts भी नहीं होना चाहिए. Yes, very good. Now sulfuric acid. Sulfuric acid के साथ सल्फोनेशन करना है। आपको कौन सा करना है, आपको SO3H ऐड करना है। NH2 को SO3H को ऐड करना है। इसमें NH2 आपको और दो और पैरा SO3H ऐड करो। मेजर आपको पैरा पे आता है। और इधर एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो एसिड है, ये जो एसिड है, ये इधर और इधर ये मूव होता रहेगा, इधर इधर वो मूव होता रहेगा, क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है, वो H+ को देता है और ये बेस है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप में, एक ही फंक्शनल ग्रुप में ये अगर ये NH2 है, तो ये क्या करेगा, दूसरा इससे दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ SO3H फॉर एग्जांपल, ओके, और सेम मॉलिक्यूल SO3H इधर से H+ ले लेगा। अगर इधर से H+ जा रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा। अगर H+ इधर मूव हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, हमें NH3+ आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको देके वो H+ ले रहा है, NH3+ SO3, और आधे में भी थोड़ा मिलेगा, बट स्टीरिक हिंड्रेंस का वजह से वो कम रहेगा। सो NH3+ SO3-। सो दिस इज कॉल्ड द, इफ any group, any compound, if it is having acid and both, acid and base both, positive and charges, positive and negative charges both are coming, that is called the Zwitter ion. In amino acids also you will study this concept. This is called the Zwitter ion. Zwitter ion. This is called Zwitter ion, in which both positive is also there, negative is also there. क्या हो रहा है इसमें, SO3H, पैरा SO3H और दो SO3H बोथ प्रोडक्ट विल फॉर्म। ये कोई भी H है वो शफल करता रहेगा इधर उधर। अगर इधर गया तो NH, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके इसको साथ लिया तो NH3+ बनेगा, ये वाला SO3- बनेगा। सो दोनों के पास चार्ज जनरेट हो रहा है। दिस इज ओनली कॉल्ड द Zwitter ion. Okay, this is all about the nitration. So this is what I was talking. If in the presence of, I have taken the acetyl chloride. So the same way acetic anhydride also you can take to make the amide, acetanilide. If you do the nitration, we got para isomer. If you do hydrolysis, OH minus NaOH means, OH minus means what? NaOH or KOH, any base you have used, or acid also, H+, anything you can take. If you do hydrolysis, you can get this one. Next, sulfonation. Sulfonation, if you get this one, para position. So what happening here? This H will shuffle from here. This will be moving, equilibrium. इधर से इधर, इधर से उधर वो travel करते रहते हैं. So if charge is developing here, that is called the Zwitter ion. This is the sulfonation. So electrophilic substitution, it is something different from the other, though it is the ortho and para directing group. So what is Zwitter ion? Zwitter ion is dipolar ion. Zwitter ion is dipolar ion which carries both positive as well as negative charge within same molecule. Just now we have seen NH3+ and SO3- structure. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction like alkylation, acylation, halogenation, whatever, due to salt formation with the aluminum chloride or Lewis acid, any Lewis acid, the Lewis acid, which is used as a, usually Lewis acid, we use it as a catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence acts as a strong deactivating group for the reaction. Okay, so this is all about this one, nitrogen and its compound. Now our syllabus is complete. So till here you no need to write in the notes, but you can go through this one to understand the concept. All I have explained to you, but only thing, these mechanisms, how it is synthesizing, this is removed from the syllabus. You can go through this also, try to understand. If you are comfortable,
It's fine. If you are not understanding, you can leave it. Okay, that's how it is not there in, as it is not there in syllabus. If you want to ask any doubts from this topic, you can ask me. Okay, it is removed from the syllabus. That's how it is. Diagenim salts, it's not there. That's how we have completed. It's the pure organic chemistry we have completed now. Now biomolecules, in that one, organic conversations will not be there, named reactions will not be there, but organic functional groups will be there, aldehydes, ketones. But chemistry will be there, like oxidation reactions will be there, reductions reactions, all these will be there. Structures are the more important.